Spiritual enlightenment of a fetus. Garbasth Chaitya Shishu Danyorva Mataha, says Ashtavakra Rishi. The child whose mother receives Chaitanya Deeksha during pregnancy grows up to become a unique and genius scholar and attains worldwide fame. मैं गर्भस्थ बालक को चेतना देता हूँ, इस विषय पर मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है। और यह विषय मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और जरूरी है, अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। अनिवार्य इसलिए कि ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु मनुष्य है। यदि हम मनुष्य के अस्तित्व को नकार दें, यदि मनुष्य को इस ब्रह्मांड से निकाल दें, तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए सारा ज्ञान और विज्ञान केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है। एक ही चिंतन, एक ही विचार, एक ही धारणा, एक ही ध्यान और एक ही तथ्य पर अपने को अग्रसर कर रहा है कि किस प्रकार से मनुष्य को पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण सभ्य और पूर्ण उन्नत बनाया जाए। और उसको उन्नत बनाने के लिए, उसको पूर्ण सभ्य बनाने के लिए, उसको चेतना देने के लिए इन सब तथ्यों और तत्वों की आवश्यकता पड़ी है। इन तत्वों में धर्म है, इन तत्वों में विज्ञान है। ज्ञान है, शास्त्र है, क्रिया है, समाधि है, ध्यान है, धारणा है और अन्य जितने भी क्रियाकलाप हैं, उन सब क्रियाकलापों का निष्कर्ष एक ही है कि हम मनुष्य को ज्यादा से ज्यादा योग्य, ज्यादा से ज्यादा सफल, ज्यादा से ज्यादा उन्नत बनाएं। आज विज्ञान यदि वायुयान बनाता है, तो वायुयान बनाने के पीछे इसका मकसद और मंतव्य इतना ही है कि मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी जा सके। यदि उसने टेलीफोन बनाया है, तो उसका पीछे मंतव्य उसका इतना ही है कि मनुष्य अपने आप को ज्यादा सुखी बना सके। यह सारा विज्ञान की प्रगति केवल एक ही केंद्र बिंदु पर आधारित है कि मनुष्य ज्यादा सुखी हो। मनुष्य ज्यादा सुखी बाह्य रूप से भी होना चाहता है, मनुष्य ज्यादा सुखी आंतरिक रूप से भी होना चाहता है। बाह्य रूप से ज्यादा सुखी होने के लिए उसे विज्ञान के उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए विज्ञान कोई मदद, कोई सहायता नहीं करता। विज्ञान को अगर उन्नति करनी है तो वह केवल उसके बाह्य रूप को सुखी और सफल बना सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुखी और सफलता देने के लिए विज्ञान आवश्यक है, मगर वह उसका बाहरी क्रियाकलाप है, वह उसका बाहरी चिंतन है, वह उसको बाहर से सुखी और संतुष्ट और सफलता दे सकता है। मगर यह जरूरी नहीं है कि यह सब सुख और साधन होते हुए भी मनुष्य पूर्ण आनंद अनुभव कर सके। यह अनिवार्य नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि मनुष्य सुख और आनंद अनुभव तभी कर सकता है जब वो आंतरिक रूप से भी सुखी और सफल हो। और आंतरिक रूप से सुखी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह धर्म का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह शास्त्र का आश्रय ले, यह आवश्यक है कि वह उन चिंतन, उन विचारों, उन धारणाओं को अपनाए जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने हमें प्रदान की है। उसके लिए बाहरी क्रियाकलाप आवश्यक नहीं है, उसके लिए ज्यादा ताम झाम की जरूरत नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर की ओर प्रवेश करें। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर अपने जितने भी द्वार हैं, अंदर जितने भी चक्र हैं, उन चक्रों को हम भेदन कर सकें। चाहे वह मणिपुर चक्र हो, चाहे अनाहत चक्र हो, चाहे आज्ञा चक्र हो, चाहे सहस्रार चक्र हो। जब तक हम आंतरिक रूप से समाधि के माध्यम से अंदर नहीं पहुंच सकेंगे और अंदर जाकर के उस समस्त देहों को पार नहीं कर सकेंगे, तब तक हम जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। और यदि मनुष्य के जीवन में आनंद नहीं है तो मनुष्य सुखी भी नहीं है। पलंग पर लेटे लेटा भी करवटें बदलता रहता है, चारों तरफ सुख सुविधाएं होते हुए भी बेचैन और परेशान बना रहता है, क्योंकि उसका मूल उद्देश्य, मूल धर्म, मूल चिंतन, मूल विचार इतना ही है कि वह सभी दृष्टियों से सफल हो, मगर सुखी हो, संतुष्ट हो। और यह संतुष्टि का भाव उसका आत्म केंद्रित भाव है, क्योंकि मनुष्य के बाहरी शरीर के अंदर और भी 6 शरीर हैं।
इस प्रकार से इन सातों शरीरों का भेदन करने की क्रिया जीवन की एक अनुभूत क्रिया है। वह चाहे भूलोक हो, स्व, मह, जन, तप और सत्यम, ये समस्त लोग शरीर के अंदर के लोग हैं, शरीर के अंदर के द्वार हैं। इन एक द्वार से दूसरे द्वार, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें द्वार पर पहुंचने की क्रिया को अध्यात्म कहते हैं। यह विज्ञान हमें नहीं बता सकता। विज्ञान के ग्रंथों में इसका कोई उत्तर नहीं है। विज्ञान के पास इसका हल नहीं है। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं प्रदान कर सकता। विज्ञान मनुष्य को भूख नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को उन्नति नहीं दे सकता। विज्ञान मनुष्य को संतुष्टि नहीं दे सकता और विज्ञान मनुष्य को आत्म तृप्ति भी नहीं दे सकता। विज्ञान की लिमिट है, एक सीमा है। वह बाहरी जीवन के चिंतन को तो दे सकता है, आंतरिक जीवन के आनंद को वह प्रदान नहीं कर सकता। और आंतरिक जीवन के आनंद को प्रदान करने की क्रिया को ध्यान कहते हैं, साधना कहते हैं, समाधि कहते हैं। इस ध्यान, इस समाधि और इस साधना को जीवन का आवश्यक तत्व और अनिवार्य तत्व माना गया है। परंतु प्रश्न तो यह है कि क्या यह सभी मनुष्य को सिखाई जा सकती है? क्या इनमें मनुष्य को पारंगत किया जा सकता है? क्या ये सब ज्ञान देने से मनुष्य ज्यादा सुखी और सफल और संतुष्ट और तृप्त हो सकता है? मेरा उत्तर है कि यह पूर्णता प्रदान नहीं कर सकता। केवल शिक्षा देने से और उसको शास्त्र चर्चा करने से मनुष्य के हृदय में उन सातों द्वारों को प्राप्त नहीं कर सकता। वह तो एक प्रयत्न है, वह एक प्रयास है। उस प्रयास में वह ध्यान के माध्यम से, समाधि के माध्यम से अंदर उतरने की क्रिया करता है और वह बाहरी शरीर से अंदर, इस भूलोक से अंदर भूलोक तक पहुंचता है, स्वलोक तक भी पहुंचता है। गायत्री के मूल बिंदु को, मूल बीज को, जहां भूर्भुवः स्वः कहा गया है, वह मूल बिंदु, वह मूल बीज केवल सातों द्वारों को स्पष्ट करने की क्रिया है। और उसमें बताया गया है कि मनुष्य पूर्ण आनंद, मैं आनंद शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, सुख शब्द का नहीं। सुख तो बाहरी वस्तुओं से प्राप्त हो सकता है, आनंद तो आंतरिक अनुभूतियों से प्राप्त हो सकता है। और आंतरिक अनुभूतियां जब हम सातवें द्वार तक पहुंचते हैं तब प्राप्त हो सकता है। क्या मनुष्य इस ध्यान के माध्यम से, धारणा के माध्यम से, समाधि के माध्यम से उस सातवें द्वार तक पहुंच सकता है जहां आनंद का सरोवर है, जहां पूर्णता है, जहां तृप्ति है, जहां निश्चिंतता है? पहुंच सकता है, मगर इसके लिए सक्षम और समर्थ गुरु की जरूरत है, जो उसकी उंगली पकड़ करके उसको एहसास कराए, उसको स्पष्ट करे कि इस देह के अंदर एक दूसरी देह है जिसको भूलोक कहा गया है, जिसको स्वलोक कहा गया है, जिसको महालोक, जनलोक, तपलोक और जिसको सत्यलोक कहा गया है। ऐसा तो है नहीं कि पांवों से चल करके हम एक लोक से दूसरे लोक तक या एक द्वार से दूसरे द्वार तक पहुंच सकें। यह तो अंदर उतरने की क्रिया है और अंदर उतरने के लिए जरूरी है कि उस व्यक्ति के साथ साथ गुरु भी उसके अंदर में प्रवेश करे, उसके आंतरिक चेतना को प्रवेश करे, आंतरिक चेतना को थपथपाए, उसके मूल बिंदु को स्पर्श करे, उसके अंदर के द्वार को खोले और भूलोक से आगे जाने पर, भूलोक का जब द्वार खुले तब भूलोक में जाने पर एहसास कर सके कि जीवन का मूल मर्म, जीवन का मूल चिंतन क्या है। भूलोक का तात्पर्य है हम समस्त ब्रह्मांड को समझने का ज्ञान प्राप्त कर सके। और तीसरा द्वार स्वलोक है। स्वलोक का तात्पर्य है कि जब हम ब्रह्मांड को देखने की क्रिया, ब्रह्मांड को समझने की क्रिया कर सकते हैं तो हम अपने आप को भी पहचानने की क्रिया कर सके, अपने आंतरिक जीवन को पहचानने की क्रिया कर सके कि हम कहां हैं, किस प्रकार से हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, हम ब्रह्मांड में हमारी उपलब्धि, अनिवार्यता क्यों है और हम कैसे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड को हम अपने अंदर कैसे उतार सकते हैं। ब्रह्मांड को अपने अंदर उतारने की क्रिया स्वलोक में पहुंचने पर संभव है। और जब व्यक्ति स्वलोक तक पहुंच जाता है तब उसका आगे का द्वार महालोक है। और महालोक का तात्पर्य उस ब्रह्मांड के होने वाले कार्यों में, उस ब्रह्मांड में होने वाली हलचल को अपने इंगित से, अपने इशारे से, अपने संकेत से उसमें व्याघात उत्पन्न कर सके, जैसा चाहे उस प्रकार से उन क्रियाओं को कर सके। यदि कोई घटना घट रही है तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बनाया जा सके। यहां बैठे हुए भी इस विश्व में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में यदि कोई घटना घटित हो रही है तो वह साक्षी बन सके। यह साक्षी बनने की क्रिया, चाहे वह चंद्रलोक हो, चाहे सूर्यलोक हो,
चाहे वरुण लोक हो, चाहे यक्ष लोक हो, कुबेर लोक हो, कोई भी लोक हो, उसमें स्वयं प्रवेश कर सके, जा सके, अपने आप को साक्षीभूत बना सके, वहां के दृश्य को देख सके, और यदि वहां कोई घटना घटित हो रही हो तो उसको अनुकूल और प्रतिकूल बना सके, यह महलोक है। और महलोक के आगे एक और लोक है, एक और द्वार है, जिसको जनलोक कहा गया है। और जन का तात्पर्य है अखंड आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त करने की क्रिया। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि उसकी देह भले ही बाहर है, मगर अपने इस देह से भी और सूक्ष्म देह धारण कर सके, और सूक्ष्म देह के माध्यम से वह समस्त ब्रह्मांड में विचरण कर सके, इस सूक्ष्म देह के माध्यम से दूसरे स्थान पर जा सके। जन का तात्पर्य है अपने शरीर को सूक्ष्म करके वापस उसी शरीर को प्राप्त कर देने की क्रिया। मैं जितना लंबा चौड़ा मेरा व्यक्तित्व है, शरीर है, मैं इसको बिल्कुल एक छोटा मच्छर के आकार का इस शरीर को बना करके किसी ब्रह्मांड के किसी कोने में, किसी स्थान पर जा सकूं, चाहे वह बर्फ का प्रदेश हो, चाहे उष्णता का प्रदेश हो, चाहे सूर्य लोक हो, चाहे चंद्रलोक हो, और चाहे किसी प्रकार का लोक हो, और वहां जाकर के वापिस अपने मूल स्वरूप में आ सकूं। यदि मैं 6.5 फीट का हूं तो 6.5 फीट वापिस बन सकूं। यह बन सकने की क्रिया जनलोक है, और यह उस जनलोक की क्रिया में पहुंचने पर, उस द्वार को खोलने पर ऐसी क्रिया संभव हो सकती है। बाहरी लोक से विचरण करने पर ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए जरूरी है कि आप जनलोक तक पहुंच सकें, और उसके बाद में एक और लोक बनता है, इसको तप लोक कहा गया है। एक और द्वार है, एक और शरीर है, इस शरीर के अंदर का एक तप, उस तप द्वार पर या उस तप लोक में या उस तप देह में अपने आप को हजार हजार रूपों में विभूतिकरण करने की क्रिया है। आप एक शरीर है, आप अपने साथ 20 शरीर ठीक उसी आकार के बना सकते हैं। यदि मैं एक हूं तो मैं 20 शरीर बना सकूं, 50 बना सकूं, 100 बना सकूं, और एक ही जैसे रूप, रंग, आकार, विचार, धारणा और चिंतन और सोचना और विचारने की क्रिया के साथ में। और यदि मैं 100 शरीर बना सकता हूं तो एक शरीर से यहां बैठा बैठा बात कर सकता हूं, तो दूसरे शरीर से मैं यहां से 1000 मील दूर बैठा हुआ भी उसी क्षण बात भी कर सकता हूं। तीसरे शरीर से मैं सिद्धाश्रम प्रवेश भी कर सकता हूं। चौथे शरीर से मैं सूर्य लोक में प्रवचन भी कर सकता हूं। 5वें लोक से मैं और क्रिया कर सकता हूं। मनुष्य एक शरीर से जितने शरीर बनाने की क्रिया बने, एक शरीर को रखते हुए और भी सैकड़ों शरीर बना सके, उसी आकार के, उसी चिंतन से, बुद्धि और भावना के उसी अनुरूप में, उसी अनुपात में, यह तप लोक है, यह तप द्वार है, यह तप जीवन है, यह तप देह है। और यह छठे द्वार तक पहुंचने की क्रिया जब साधक प्राप्त कर लेता है, तब अंतिम द्वार तक पहुंचता है, और वह अंतिम द्वार है सत्यम लोक, जो कि इस शरीर के अंदर 7वां द्वार है, 7वां लोक है, 7वां शरीर है। हम केवल ऊपरी शरीर को ही देख सकते हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, मगर इसके नीचे दूसरा जो शरीर है वह भी उसी प्रकार का हाथ, नाक, कान, पांव से युक्त है। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा, और 7वां जो सत्यम है वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्मानंद है, पूर्ण अखंडानंद है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता युक्त है। Spiritual enlightenment of a fetus. Garbasth Chaitya Shishu Danyorva Mataha, says Ashtavakra Rishi. The child whose mother receives Chaitanya Deeksha during pregnancy grows up to become a unique and genius scholar and attains worldwide fame. Instilling spiritual enlightenment into a child still in a womb. This subject is very significant and essential for the human beings to comprehend. And this is so because a human is the focus point of the universe. If the human race ceases to exist, then nothing shall remain behind in the universe. All the knowledge, all spiritualism has been concentrated on one single point, the human. A single thought, a single conception, a single speculation keeps resonating in this universe, and that is how to make the human race
more comfortable, prosperous, civilized, and progressive. In order to achieve all this, in order to instill spiritual enlightenment in the humans, one has to take the help of religion, science, knowledge, shastras, samadhi, dhyan, and dharana. The essence of all these and still other activities is to make the humans more capable, more successful, and more progressive. Science invented aircrafts, and the only motive behind this invention was to make traveling faster and speedier. Science invented telephone, and the only goal was to make communication easier and quicker. All the progress and development in the field of science is motivated by only one thought, and that is to make human life more and more comfortable. But a human wishes to be comfortable not only materially but also spiritually. Science helps him in acquiring all outer comforts, but it can in no way help him acquire inner spiritual comfort. If one wishes to travel fast or to communicate someone, or if one wishes for any other comfort, science does prove handy. But science can provide only with external comforts, and it is not at all necessary that a person shall remain happy even after acquiring all these material amenities. A person can attain true joy and happiness only when he is spiritually enlightened, only when he attains inner peace and comfort. And inner peace can be attained only by following dharma, by studying the shastras, and by adopting the thoughts and ideals of our great ancestors and sages. Attaining such a state does not involve any practice or use of any scientific instrument. Rather, one needs only to enter one's own soul and activate all the chakras. These chakras are subtle centers of vital energy in the body, and they Manipur, Anahat, Agya, Sahasrar need to be activated in order to attain true joy. One cannot achieve this state of true joy and comfort until one enters into one's own self through samadhi and realizes all the subtle bodies present within. One may lie on a large soft bed and still feel restless. A human being today has all comforts, all basic amenities. Still he remains anxious and troubled. The reason for this is that the real essence of human life is to attain success in all spheres of life. A human needs to feel contented, and this contentment can be generated only from the inner conscience. Inside the outer physical form, there are 6 more subtle bodies, and the enlivening of all these 7 bodies is the greatest attainment of life. The different loks, worlds, Bhulok, Bhualok, Swalok, Mahalok, Janalok, Tapalok, and Satyam Lok are represented by these 7 bodies in a human being. Each of these loks forms a door to higher spiritual planes, and spiritualism is nothing but passing through all these 7 doors. Science does not have this knowledge. No book on science contains the process to reach these doors.
Science cannot satiate the spiritual quest of man, and neither can it offer true contentment. Science cannot help in spiritual progress, and neither can it instill peace into one's soul. And the reason for this is that science has a limit. It can provide with material comforts, but cannot generate true joy in life. The process of generation of true joy in life is called dhyan or dharana or samadhi. This practice of dhyan, dharana, samadhi is considered an indispensable part of human life. But the main question which arises is, can siddhi be taught to a person? Can a human be made skilled in this practice? Can a human become more comfortable, prosperous and satisfied by obtaining this knowledge? I say that knowledge by itself cannot instill totality in life. A human cannot cross those 7 doors of spiritualism by just reading about it or listening to discourses on the Shastras. Achieving totality is in fact an attempt, a process to enter into one's own self with the help of dhyan and samadhi. It is a practice to enter one's physical body, to cross the Bhulok and all other loks and thus reach the Satyam Lok. The main Bij mantras or basic alphabets of the Gayatri mantra are Bhu, Bhuvaha, Suvaha. These Bij alphabets denote 3 of the 7 doors of spiritualism. It is emphasized in this mantra that a human can attain true joy called Anand only by crossing these 7 doors. I have used the word Anand or joy and not comforts. Comforts can be acquired from material amenities, but joy cannot. Anand can be achieved only through spiritual experiences, and one has such experiences only on reaching the 7th door. Then, can a human reach the 7th door through dhyan, dharana and samadhi? Through these practices, can one achieve that state where there is an ocean of joy, totality, satisfaction and peace? Yes, one can reach that state, but to do so, one needs a capable and competent guru. A guru who can hold one's hand and lead one onto the path of spiritual enlightenment. A guru who can make one realize that inside the physical form there are other subtle bodies called the Bhulok, Bhuvarlok, Swalok, Mahalok, Janalok, Tapalok and Satyam Lok. It is not that one can just walk and reach these loks. To reach them, one has to enter one's own soul, and one has to enter along with the Guru, so that he can fill one's heart and soul with divine enlightenment, so that he can activate the source of the vital life force, and so that he can open the doors to spiritualism. The outer physical body represents the Bhulok or the earth. Only after it has been consecrated and enlivened by the Guru can one enter into oneself and reach the next lok, that is Bhuvalok. When the door to the Bhuvalok opens up, one realizes the true essence of a human life. This second stage or Bhuvalok
represents the development of the feeling, may I attain the knowledge to understand the entire universe. The third door is Swahalok. In this stage, one develops a capability to see and understand the universe. One starts to realize one's own true self, and one finds the solution to several questions like, who am I? What is the significance of my life? How can I conquer the entire universe? How can I make the universe enter into my soul? In fact, one can realize the entire universe within one's soul on reaching the Swahalok. The stage next to Swahalok is Mahalok. On entering this lok, a person becomes capable of controlling every event occurring anywhere in this universe. Sitting in one place, he can change the course of any event going on anywhere. He can also be a witness to any incident taking place on any planet. Next to the Mahalok is the Janalok. Herein lies the key to all the joy present in the universe. On reaching this lok, a person can acquire a subtle form and can thus travel to any part of the universe. Then he can reduce his physical body to the size of a mosquito, and in this state he can travel anywhere to any planet. On reaching the planet, he can regain his original form. Thus, a unique capability to reduce one's size and then regain it can be achieved on entering the Janalok. After Janalok is the Tapalok. Through the unique attainments of this lok, one can form other bodies similar to one's own. One can thus form 20, 50, 100 or more bodies of the same size, same complexion, same physique, and with the same thinking process. Just imagine that if I can form 100 other bodies similar to my own, then I can sit here in one form talking to you. With my second body, I can at the same time be thousands of miles away with someone else, and in my third body, I can enter into Siddhashram. With the help of my fourth body, I can be in Suryalok giving discourses, and with the help of my fifth body, I can carry on some other task. Thus, being in Tapalok, one can form hundreds of other bodies in order to accomplish various tasks at the same time. After crossing the sixth door, one reaches the seventh door called the Satyam Lok. This is the seventh body or seventh stage of spiritualism. With our material visions, we can see only the outer physical body with its ears, nose, eyes, hands and legs. But inside this outer body, there is the second, then the third, fourth, fifth, sixth and finally the seventh body. This final state, Satyam Lok, is the door to Brahmanand, the eternal joy, and reaching it, one is filled with complete spiritual enlightenment.